Assalamu alaikum everyone. Welcome to Psychology Facts by Lara. So students, आज हम डिस्कस करेंगे FA पार्ट 1 का एनुअल साइकोलॉजी पेपर 2017 का, जिसमें सॉल्व्ड MCQs हैं। So सबसे पहले आपके लिए रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। So number 1 MCQ is psychology is combination of two dash words psyche and logos. Option A Greek, option B Latin, option C English, and option D French. So psychology is the combination of two Greek words, psyche and logos. Psyche means soul, mind, or logos means study. So for the very first time it was known as study of soul, but now it is known as study of mental processes. Number 2. What is the subject matter of modern psychology? Option A consciousness, option B behavioral and mental processes, option C soul, and option D unconsciousness. And the right option is option B behavior and mental processes. अब जो psychology की modern definition है वो है psychology is the scientific study of behavior and mental processes. So इसका subject matter है behavior or mental processes. Which one of the following is not an aspect of mental process or state? Option A cognition, option B cognition, option C affection, and option D unconsciousness. And the right option is option D unconsciousness is not the aspect of mental state. जो बाकी options हैं cognition, cognition and affection, इसको triology भी कहा जाता है. So overall psychology में ये 3 एस्पेक्ट्स या मेंटल स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है और ओवरऑल जो है स्टडी भी कॉग्निशंस की, कोनेशंस की और अफेक्शन की होती है। नंबर 4. व्हाट इज द फर्स्ट एंड लास्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी? ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रोल बिहेवियर, ऑप्शन बी प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन डी डिस्क्राइब एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर. And the right option is option D description and control of behavior. तो सबसे पहला गोल होता है description, फिर उसके बाद होता है explain, फिर इसके बाद होता है predict, इसके बाद होता है control. Number 5. Experimental psychology studies or observes the effect of option A dependent variable, option B independent variable, option C extraneous variable, option D इंटरनल वेरिएबल्स. सो अगर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम किसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट को मेजर करते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है और उसके इफेक्ट्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखे जाते हैं. नंबर 6. वाइट कॉलर क्रिमिनल्स आर दोज हु ऑप्शन ए वियर क्लीन क्लॉथ्स, ऑप्शन बी वियर शर्ट्स with white collars, option C leave no traces of crimes, option D commit crimes for the betterment of society. And the right option is option C leave no traces of crimes, जिनको प्रोफेशनल क्रिमिनल्स भी कहा जाता है, जो कि प्रॉपर किसी प्रोफेशन के अंडर कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उनको वाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी कहा जाता है. Number 6. Number 7. When psychologists get the information from present to past of the individual, they are using option A survey method, option B clinical method, option C daybook method, and option D biographical method. And the right option is option C daybook method. Daybook method में usually एक पर्सन जो है उसकी एक्सपीरियंसेस को एनालाइज किया जाता है और जिस तरह से डायरीज जो लिखते हैं डे टू डे, सो ओवरऑल घर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन पर्सन की मिल सकती है और उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, वो उसकी रूटीन क्या है, सो प्रेजेंट टू पास्ट तक इंडिविजुअल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डे बुक मेथड के ज़रिए आसानी से मिल सकती है. Number 8. When researchers believe that person concerned can only examine and convey his mental states processes better, he is favoring option A participant observation, option B non-participant observation, option C introspection, and option D external observation.
अगर एक पर्सन जो है फेवर कर रहा है कि खुद पर्सन अपनी थॉट्स और अपने आइडियाज़, अपनी मेंटल स्टेट को अच्छे से असेस कर रहा है, तो वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को फेवर कर रहा है. द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स. नंबर 10, डैश कंट्रोल हंगर, थर्स्ट एंड सेक्सुअल बिहेवियर. थैलेमस जो है अगर उसकी बात करें तो ये होमोस्टैसिस को मेंटेन करता है. ऑल्फैक्टरी बल्ब की अगर हम बात करें तो ये सेंसेशन ऑफ स्मेल से रिलेट करता है. हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर, थर्स्ट एंड सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है. और सेरिबेलम जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है. Number 11. When light is focused on the blind spot of an eye, no sensation take place because option A, there are no rods and cones. Option B, fovea yellow spots interfere with visual process. Option C, it is not linked with optic nerve. And option D, retina has nothing to do with visual process. So the right option is option A, there are no rods and cones. Number 12. Despite intact eye and optic nerve, Ahmed cannot see which of the following lobe is likely to be dysfunctional. Option A, frontal lobe. Option B, occipital lobe. Option C, parietal lobe. Option D, temporal lobe. अगर हम frontal lobe की बात करें तो ये executive functions perform करता है. और occipital की बात करें, occipital is related to eye and vision. So the right option is option B. And parietal lobe जो है वो sensation of touch, pain and temperature से relate करता है. And temporal is related to hearing. Number 13. Which part of the middle ear equalizes air pressure on both sides of the eardrum? Option A, oval window. Option B, Eustachian tube. Option C, hammer bone. And option D, anvil bone. And the right option is option B, Eustachian tube. Number 14. When later learning affects the previously learned material in such a way that previously learned material is either forgotten or there is a decline in its retention, it is called proactive inhibition, retroactive inhibition, motivated forgetting, and option D, forgetting due to disuse. And the right option is option B, retroactive inhibition. रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन के लिए आप बैकवर्ड वर्ड जो है वो रिलेट कर लें या रिवर्स रिलेट कर लें, जिसमें पास्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिक्लाइन करने लग जाती है जब आप न्यू इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहे होते हो. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Number 14. Number 14, we have discussed number 14. Number 15. Which of the following structure of personality acts on a flyer principle? Option A, id. Option B, ego. Option C, superego. And option D, ego ideal. And the right option is option A, id. id की अगर हम बात करें तो ये flyer principle पे work करती है. Ego is based on reality principle and superego is based on morality principle. और ईगो आइडियल जो है वो फर्दर सुपर ईगो की एक्सप्लेनेशन में आता है कि किस तरह से हमने अपना ईगो आइडियल जो है वो सेट किया होता है. Number 16. An adolescent busy in thumb sucking most of the time may be fixated at option A, anal stage, option B, phallic stage, option C, latency period, and option D, oral stage. And the right option is option D, oral stage. Oral stage is related to oral नीड्स और ऑरल नीड्स में ओवरऑल जो है वो थम सकिंग की बात भी आती है. और जितनी भी अगर ग्रेटिफिकेशन अगर ज़्यादा ओवरली ग्रेटिफाइड हुई हैं या अंडर ग्रेटिफाइड है तब भी ऑरल फिक्सेशन आ सकती है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑरल स्टेज. Number 17. Army Alpha is a dash test. Option A, group test. Option B, individual test. Option B, aptitude test. And option D, interest test. And the right option is option A, group test. Number 18. The articulation of all options and thoughts related to the solution of problem is called option A, cooperative learning. Option B, discussion. Option C, brainstorming. And option D, heuristics. And the right option is option C, brainstorming.
Number 19. WAIS stands for option A. Wechsler Assessment of Intelligence System. Option B. Wechsler Adult Intelligence Scale. Option C. Wechsler Assessment of Information System. And option D. Wechsler Intelligence Scale for Adolescents. And the right option is option B. Wechsler Adult Intelligence Scale. Number 20. Two-factor theory of intelligence was introduced by option A. Spearman, option B. Guilford, option C. Binet-Simon, option C. Wechsler. And the right option is option A. Spearman, जिसको Spearman two-factor theory of intelligence भी कहा जाता है, जिसमें two factors explain किए, general factors for intelligence and specific factors for intelligence. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।